Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We'll start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that for the very first time, the Nifty has closed at 17,300. Only the cautious was this Nifty, though it has given a kind of breakout on the higher side. The Nifty future has closed at 11-point discount. So normally, whenever there's a breakout, we see a very good premium on the Nifty future. So that was one part which was missing in yesterday's session. However, having said that, banking and autos were the sectors which has contributed to this rally, while a few sectors like some of the stocks specific within the capital goods, metals, and IT remained under pressure. So overall, coming to the technical view, so we had this range bound of view for the over the last couple of weeks. So for in yesterday's session, for the very first time, 17,250 level was taken out. So above 17,250, we are looking for 17,500, 17,600 as a the next level of upside for the week. And lower side, the support level, which was earlier at 16,800, has now shifted to 17,000. So the base would be at the 17,000 levels. Coming to Bank Nifty was the outperformer. Bank Nifty in futures, it tested the 40,000 levels. So the trigger was 39,500. That was the call writing area from where the buying came. So we believe the Bank Nifty is going to outperform. Within the Bank Nifty, PSU Bank, we name anything like SBI, Canara Bank, Bank of Baroda are looking very strong positive on the charts. So I think this momentum will be seen in the PSU banks for the next couple of for the next 3-4 trading sessions. The bias is very strongly positive. Bank Nifty, I believe we should be heading for 42,000, 42,500 on the higher side. And the last couple of weeks, the lower side range was 39,000. So 39,000 and then 38,500. So that might act as a support for the Bank Nifty. So the view for the Nifty and Bank Nifty is strongly bullish, and I think we should be looking at the higher side. Coming to the derivatives data, the Nifty futures are added the long position in yesterday's session to the tune of 2.65%, which was the addition of 384 shares, 384,000 shares. The put call, the PCR is also now climbed above one level, which is at 1.11. This also adds the strength to the market. The major call the major additions in the call option was seen in the 17,300 and 17,500 strike price by 67.79 and 58.19 million shares each. While on the put option front, 17,000 strike price has seen a significant increase in open interest by 61.34 million shares. Coming to Bank Nifty also witnessed long build-up to the tune at 1.69% in the open interest, which was an addition of 35,900 shares. The major additions were seen in at 40,000 call options by 22.27 million shares, and at the lower side, the put option 39,500 saw the increase in the additions by 28.69 million shares. A few long build-ups which were seen in yesterday's session was CUB, City Union Bank, HAL, and JNFC, whereas the short build-ups were seen in Syngene, Shree Cement, and Canfin Homes. The most active stocks in yesterday's sessions were CUB, Canara Bank, and Bank of Baroda. And the negative stocks was in the yesterday's sessions, Oberoi Realty, Navin Fluoro, and VDL. We are taking a call in derivative segment that is a Zydus Life. We are recommending a buy in the range of 400 to 412 with the stop loss of 401. The target would be 438. Coming to FI data, so FIs in the futures, they added a long positions close to 3,000 contracts. The overall net they're still short by 87,000 contracts, and the long short ratio is little bit improved from 22% to 23.64%. Whereas in cash segment, the FIs went short by 372 crores, and DI was the net buyers by 1582 crores. So overall, the net buyers remain bullish, and we are looking for a range breakout on the higher side. That's all from technical. Over to Varun for more update. Thank you very much, Brijesh. From research side, first update is on PVR. So PVR has reported
underwhelming numbers. Q2 result was below our estimates. Revenue declined 30% quarter on quarter due to poor Bollywood content, which impacted the occupancy and ATP. Consequently, a company has incurred losses at EBITDA levels. Revenue under all the segments like box office collection, F&B, and advertisement saw a sequential decline in the range of 9 to 39%. Second half of FY23 is expected to witness strong content pipeline, and in addition, the company plans to add 100 to 125 screens during the year. Advertisement revenue is also expected to witness a strong bounce back. So these coupled with synergies due to merger bode well for PVR. As per revised business outlook, we have downgraded our EPS estimates by roughly 6% in FY24, driven by variability in content, which could impact occupancy and ATP. Accordingly, our revised target price stands at around 2100 rupees, which is 14 times FY24 EBITDA. We maintain our buy rating on the stock given favorable valuation. Next update is on ACC. So ACC has reported 6% year-on-year growth in revenue, roughly 4% growth in volume. EBITDA came 95% lower than what we and consensus were estimating. So miss was on account of higher than estimated power and fuel cost and raw material cost, along with lower volumes and realizations. Segment-wise, EBIT margin for cement and RMC declined to roughly -4% and 1% respectively. A Meetha project is delayed to March 23 for ACC. Earlier guidance was December 22. Waste heat recovery system at Jamul and Kaimur plants are partially commissioned during third quarter. WHRS projects at Chanda and Wadi plants are progressing well. We'll be coming out with detailed note post management interaction. Next update is on IRCTC. So Indian Railway has informed that the proposal of merger of IRCTC and RailTel has now been handed over to Department of Investment and Public Asset Management, which is DIPAM. So DIPAM shall take a call on the same, as Railways believe this matter involves two listed entities. This merger was a part of suggestion provided by restructuring of Indian Railways to make it more efficient by minimizing overlaps in operations. RailTel is involved in modernizing trains and providing broadband services, and IRCTC provides ticketing and catering services. We currently have a buy rating for IRCTC with a target price of 804. Last update is on VMart. So VMart is likely to acquire an online marketplace company called LimeRoad. For this, VMart will be paying 31 odd crore. So LimeRoad enjoys currently revenue of roughly 69 crores, and VMart is planning to invest 150 odd crores to enable LimeRoad to scale and achieve sustained profitability. So the MD of VMart, Mr. Lalit Agarwal, said with this acquisition, company aims to not only acquire digital first millennials but also build its omni-channel expertise. We believe that this bodes well for the shareholder of the company. So that's it from my side. Over to you, Brijesh. Thanks, Varun. The few more results update from my end. Coming to IRB Invest IT Fund, they reported a Q2 earnings. The net profit was up by 2.4% at rupees 176.4 crores versus 180.8 crores year on year. The revenue was up by 38.5% at rupees 913 versus 660. More update on the SpiceJet. There was a news that SpiceJet aircraft was involved in an incident of a smoke in cabin during the descent emergency landing at Hyderabad. The passengers were safely evacuated with the assistance of the cabin crew. This was the news for the SpiceJet. Gujarat Gas. The Gujarat government has cut the VAT on the CNG and PNG by 10%. So that should be some positive news for the Gujarat Gas. Tata Coffee has reported its number. The net profit was up by 317% at 142 crores year on year and 215% quarter on quarter. The revenue was up by 31% at 718 crores year on year, which is up 8% by quarter on quarter.
Maharashtra Seamless also has approved the 1:1 bonus issue. They also reported their numbers. Net profit was up by 96% at 178 crores, which is year and year, and 17% quarter and quarter. The revenue was up by 48% at 1,414 crores, which is year on year, and 6% quarter on quarter. Tata Metallic also reported the numbers. Net profit was down by 74% at 14.29 crores year on year, and 1.22 crores profit quarter on quarter. Revenue was up by 36% at 876 crores year on year, and 31% up by quarter on quarter. This container car from July and September, total cargo volumes are up by 17%, which is year on year at 1.14 megatons. For the same quarter, the throughout the export and import was up by 936 9 lakh 36,000 units, so which was up by 18.2% year on year. Canfin has also reported the numbers. The net profit was up by 141.7 crores versus the CNBC TV poll was 143.1 crore. So net profit. This net profit was from the year on year, it was 14.6% as compared to the previous year. A few more news updates that JMC Projects India, the company has raised 75 crores via NCD, as it has allotted 750 non-convertible debentures of the face value of rupees 10 lakh on private placement basis. The Ashar DM Healthcare, the subsidiary of the Aster Pharmaceutical Group, has entered into a joint venture agreement with Abdul Mohsen Al Khair Holding Group to establish, manage, and operate pharmacy chain across the Kingdom of Saudi Arabia to market and commercialize pharmaceutical products under the Aster Pharmacy brand. Maharashtra Seamless, there's one news update. The company has appointed Sat Kumar Mohanty as Chief Financial Officer and recommended issue of the bonus shares in the ratio of 1 bonus equity share against 1 existing share, subject to the approval of shareholders. Its consolidated profit for the quarter ended September FY23 has grew by 86% to rupees 176 crores. Compared to year ago, the revenue has increased by 49% to the tune of 1,414 crores. There is a new one news in Ashiana Housing. The company has acquired a piece of land measuring 2.26 crores on perpetual basis from Mahindra Lifesize within the township of Mahindra World City at Chennai. So the total acquisition of land along with the above said land now stands at 17.90 crores. So there is a the CNBC sources have said that the OFI Global Fund is looking to sell shares up to rupees 1,396 crores of Z Entertained via block deal at rupees 250 per share to the 263.7 per share, which is one update. So I think that's all from my end. I will over to Kshitija for the more Hindi updates. Thank you all. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी कॉल को हम लोग एक बार हिंदी में कर लेते हैं. तो फर्स्ट अपडेट है वो है पीवीआर के ऊपर. पीवीआर के कल नंबर्स आए थे. जो रिजल्ट है वो हमारे जो एस्टिमेट्स था उससे नीचे आया है. जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुई है 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि जो बॉलीवुड का कंटेंट था वो पुअर था, उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा. और उनका जो एबिटा है वो भी लॉस में रिपोर्ट हुआ है. और जो उनका रेवेन्यू है जो ऑल सेगमेंट में जिस उसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, एफएनबी है, एडवर्टाइजमेंट है, रेवेन्यू उसमें भी सिक्वेंशियल डिक्लाइन पाया गया है. 9 to 39% की रेंज है. सेकेंड हाफ में फाइनेंशियल ईयर 23 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट है इसमें विटनेस होगा.
और इसके अलावा भी कंपनी का प्लान है कि वो एडिशनल 125 स्क्रीन ये ड्यूरिंग ईयर में स्टार्ट करेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देगा। और इसके अलावा जो मर्जर है वो भी अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। तो करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नेक्स्ट अपडेट है आईआरसीटीसी के ऊपर। जो इंडियन रेलवे से उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने जो प्रपोजल है मर्जर का आईआरसीटीसी का रेलटेल के साथ, वो अभी हैंडओवर किया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट में। जो अभी कॉल मतलब इसके ऊपर जो भी डिसीजन या कॉल है वो देखेगी ये मैटर में। तो एक मर्जर जो था वो सजेशन के लिए प्रोवाइड किया था, जो रिस्ट्रक्चर होकर इंडियन रेलवेज को एक मोर मतलब और इफिशिएंट बनाएगा और जो ओवरलैप ऑपरेशन है वो थोड़ा कम होगा। तो जो रेलटेल कंपनी है वो इन्वॉल्व है मॉडर्नाइजिंग ट्रेन्स जो प्रोवाइड करती है ब्रॉडबैंड सर्विसेज, एंड आईआरसीटीसी जो प्रोवाइड करती है टिकटिंग एंड कैटरिंग सर्विस। सो करंटली स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग है, जो टारगेट प्राइस है वो 804 है। और नेक्स्ट अपडेट है वीमार्ट जो कंपनी है वो अक्वायर करने वाली है फैशन मार्केट प्लेस लाइम रोड को, और उसमें इन्वेस्ट करेंगी 150 करोड़ जो स्टार्टअप का स्केल होगा। सो बेसिकली जो ये सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी है ऐसे प्रेस में बोला गया है। तो ये पार्टनरशिप के बाद कंपनी जो है वो कंबाइन लाइम रोड फैशन कोशंट होगी, जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी और डेटा है वीमार्ट के पास। तो उसका इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस बनाएगी 410 स्टोर्स में अक्रॉस ओवरऑल टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज में। नेक्स्ट अपडेट है एसीसी के ऊपर। एसीसी के नंबर्स आए थे, जो नंबर्स आए थे उसमें रेवेन्यू 6% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हुई है और 4% ग्रोथ हुई है वॉल्यूम बेसिस पे। उसके अलावा कंपनी का जो कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 45 से लेके 50 मेगा एमटीपी कैपेसिटी के जो इंस्टॉलमेंट कर दी है और करंट अभी 36.1 एमटीपी है। उसके अलावा जो उनका एमेटा का प्रोजेक्ट है वो और इसमें ऐड करके 3.7 मेगा एमटीपी कैपेसिटी होगी और ये मार्च 23 में कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेशन है। उसके अलावा कंपनी ने बोला है कि उनका जो WHRS प्रोजेक्ट है वो जम्मू लैंड कायमूर में वो Q3 कैलेंडर ईयर 22 में होगा। और ये WHRS प्रोजेक्ट है वो चंदा एंड बाड़ी का है, वो प्रोग्रेसिव है एज पर शेड्यूल। और ये प्रोजेक्ट है वो एसीसी में जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करेंगी। सो नेक्स्ट अपडेट है आईआरबी इनवाइट करके जो कंपनी है उनके नंबर्स आए थे। नंबर्स जो है वो नंबर्स में जो हम लोग देखेंगे तो नंबर्स रिपोर्ट किया गया है। नेट प्रॉफिट है वो डाउन हुआ है 2.4% से 176.4 करोड़। रेवेन्यू है वो अप है 38.5% से और इनका इबिटा है वो भी डाउन आया 24% से। नेक्स्ट अपडेट इज स्पाइस जेट के ऊपर। स्पाइस जेट के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ था स्मोक इन कैबिन का। ये इमरजेंसी उसके कारण इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था हैदराबाद में, पर पैसेंजर को सेफली इवोकेट किया है और ये केबिन क्रू ने अपडेट दिया है। नेक्स्ट अपडेट है टाटा कॉफी के ऊपर। टाटा कॉफी के नंबर्स आए थे Q2 के नंबर्स। नेट प्रॉफिट है वो काफी अच्छा है, नेट प्रॉफिट अप होके 317% है 142 करोड़ ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 215% से अप है। रेवेन्यू भी अप है 31% से 718 करोड़। तो ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है वो डाउन हुआ है 31% से। नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र सिमलेस के ऊपर। कंपनी ने 1:1 का बोनस इशू अनाउंस किया है और उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 96% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू है वो 48% से इंक्रीज होके 1414 करोड़ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% इंक्रीज हुआ है। टाटा मेटालिक के भी नंबर्स आए थे। नेट प्रॉफिट है वो डाउन आया है 74% से 14.29 का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर। और जो उनका रेवेन्यू है वो 36% से इंक्रीज हुआ है
ईयर ऑन ईयर पे 876 करोड़ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 31% है। नेक्स्ट अपडेट है कॉनकॉर के ऊपर। कॉनकॉर के जुलाई से लेके सितंबर के टोटल कार्गो वॉल्यूम से वो 17% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, जो अभी 1.1 M टन्स यूनिट्स है। और सेम क्वार्टर हम लोग एक्सपोर्ट थ्रू आउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड मेजर करें और रिपोर्ट करें तो उन्होंने 9,36,950 TEUS रिपोर्ट किया है, जो ईयर ऑन ईयर हम लोग देखें तो 18.2% से इंक्रीज हुआ है। उनका जो डोमेस्टिक वॉल्यूम है वो भी राइज हुआ है 9% से ईयर ऑन ईयर, जो 2,06,945 TEU यूनिट्स है। नेक्स्ट अपडेट है कैनफिन के ऊपर। कैनफिन में उनके भी नंबर्स आए थे। नेट प्रॉफिट जो है वो 141.7 करोड़ रिपोर्ट किया है और उनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 251 करोड़ है, जो नेट प्रॉफिट अप हुआ है 14.6%, जो रिपोर्ट किया है 141.7 करोड़। नेक्स्ट अपडेट है जीएमसी जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने बोला है कि वो कंपनी रेज करेंगी 750 करोड़ वाया एनएसडी से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से, और ये अलॉटेड होगा 750 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। उसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज 10 लाख है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है एस्ट्रल डीएम हेल्थ के ऊपर। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी एस्ट्रल फार्मा ग्रुप एलएलसी, उन्होंने जॉइंट वेंचर में अग्रीमेंट साइन किया है अब्दुल मोहसिन अल होकर होल्डिंग जो कंपनी है, जो एस्टैब्लिशर मैनेजमेंट और ऑपरेट करती है फार्मेसी चेन अक्रॉस सऊदी अरेबिया में। तो ये कमर्शियलाइज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है एस्टर फार्मेसी ब्रांड के। नेक्स्ट अपडेट है जो एसजीवीएन जो कंपनी है, उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी एंड आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है जो डेवलप करेंगे 1000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन आसाम में। नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र सिंगलेस के जो नंबर्स है, उसके अलावा कंपनी ने सूरत कुमार मोहंता एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट अपडेट है जो एशियाना हाउसिंग है, कंपनी ने बोला है कि वो अक्वायर करेंगे पीस ऑफ एडिशनल लैंड 2.26 करोड़, जो परपेचुअल बेसिस पे होगा महिंद्रा लाइफ स्पेस जो विद इन टाउनशिप है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में, चेन्नई में, तमिलनाडु में। और ये टोटल एक्विजिशन लैंड है अलोंग विद जो ऊपर बोला है उसके अलावा अभी स्टैंड्स कर रही है 17.19 एकर्स। देन नेक्स्ट अपडेट है जील के ऊपर। जील जो कंपनी है, उन्होंने बोला है कि मतलब एज पर सीएनबीसी की सोर्स है उससे ओएफआई ग्लोबल फंड है, उन्होंने शेयर्स जो है वो सेल किए हैं जो वैल्यू जो है वो 1396 करोड़ है ब्लॉक डील के मतलब ब्लॉक डील वाया ब्लॉक डील से, और ये 250 पर शेयर से लेके 263.7 पर शेयर के ऊपर सेल हुए हैं। देन लास्ट अपडेट है एनटीपीसी के ऊपर। कंपनी ने एक पैक साइन किया हुआ है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रियल एंड उसके जो आर्म है पावर इंडिया, जो डेमोन्स्ट्रेट करेगी फिजिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन का। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.